श्रीमद् राधा गोविंद कृष्ण प्रत्यानंदे बल हरि बोलो। ओं नमो भगवते वासुदेवाय। त्रिंशद्याय श्री भगवानुवाच तस्सैतस्यो जनो नूनं नायं विदुरुविक्रमम् कल्यामानोऽपि बलिनो उपायो दिवो घना बलि जमर्थमुपादत्ते दुःखेषु सुखहेतवे तं भुनोति भवान् पुमान् जोचति यत्कृते जरध्रुवैषु मे देहैषु सार्वण्येषु दुर्मति ब्रुवाणि मन्यते मोहादगृहक्षेत्रवसूनिषु जन्तुर्विभवा वैवयतस्मिन् जां योनि मनुव्रजे तैषां सो लभते निर्वृति नो बीजस्यते नरकस्थोऽपि देहं वैनो पुमां त्यक्तुमिच्छति नारक्यां निर्विदो शैत्यां देवमाया विमोहित आत्मजाया सुतागारो पशु शूद्र वीणबन्धसु निरुरं हृदय आत्मानं बहुमन्यते सुदज्यमान सर्वांगो येतामुद्वहनाधिना करोत्य वीरचं मूर्हो दुरितानि दुराशया अक्षिप्ताप्तेन्द्रियो स्त्रीणां वसतिनाञ्चो माया रहो चिरालापै शिशूनां कलवास्या गृहेषु गुरुधर्मेषु दुःखतन्त्रेषु तन्द्रचाः कुर्वन् दुःख प्रतिकारं सुखवन्येतु गृही अथैरापादितै गुरुव्याहिंसायेतु सतत्युतान् पुष्णाति येषां पोषेणो शिशवो भूद्वित्ययस्य वार्तायां मानायां मकरन्धायां पुनः पुनः लोभाभिभूतो नीतस्थो परर्धे कुरुते श्रियं कुटुम्बैश्वराने काले मन्दभाग्यो विशोद्यमो श्रिया वीनो कृपयो ध्यानशोषीति मूरधि एवं शोभरणाकल्यं तत्कलत्यादयस्तथा नाद्रियन्ति तथा पूर्वं कीलानाम् इवो गोसरम् तत्रापदानि वितेरु म्रियमाणाश्रयभृते जरयो पट्टवैरूप्यो मरणाभिमुखो गृहे आस्ते अवमृत्यो पन्यस्तं गृहपालो विवाहरम् अमया व्यप्तजीगुप्तानां शिल्प्या भारो अल्पचेष्टितः वायुनोर्प्रकमो तारो कपशं रुद्धनारिणा काकशासक्रीटागासो शोकण्ठो घूरघुरायते शयानोपरि शोचन्ति परिवीतो स्वयंबन्धुभिः बच्यमानो नो ब्रूतो कालपाशवसङ्गत एवं कुटुम्बभरणे व्यापृतात्मनि जितेन्द्रिय म्रियते रुदतां स्वानामुरुवेदन्तरि जमदूतौ तथा प्राप्तौ वीरो सर्वशेखिनौ सो दृष्ट्वा एतद्धियं सकृन्मूर्तं विमुञ्चति जातनादेहो आवृता पाशैर्बद्धा गले बलात् नैतो दीर्घमध्वानं दन्द्यां राजभटा यथा तयोर्निर्भिन्न हृदयस्तञ्जनैर्जात बेपठु पथीशोभिर्भक्ष्यमानो आर्तोऽयं घमनुस्मरन् च्युत्पीडितो कर्दमधारनरानीलैः सन्तप्यमानो पथि तन्दबालुके कृष्णेनो पृष्ठे कषयासु तारितच्चलत्यशक्तेऽपि निराश्रमोदके तत्रोपतन् शान्तो मूर्छितः पुनरुत्थितो पठापापीयसा नीतं वस्तमसा जमदसादनं योजनानां सहस्राणि नवतिं नवो शाब्दन त्रिभिर्मुहूर्तैर्द्वाभ्यां वा नीतो प्राप्नोति जातना अधिपनं स्वगात्रानं विष्टदीतोऽन्तारिभिः आत्ममंशासनं क्वापि सोपीतं परतोऽपि जीवितन्त्राभ्योदारं सोगृह्यमसदानिनो
सर्पभीति सर्वभीतिकदंसाध्यै दशद्भीषो सात्मवैशसं कृन्तनञ्चाभयजसो गजादिभ्यो विलापनं पाठनं गीतिसिंहेभ्यो जोधनञ्चायुगपर्तयो जस्तामि सन्धतामिषु रौरवाद्यञ्चो जातना भुङ्क्ते नरो वा नारी मिथलसङ्गेनो निर्मिता अत्रैवो नरको सर्गो इति मातो प्रचख्यते जातना वै नारकज्ञा इहाप्युपलक्षिताः एवं कुटुम्बं विघ्नानो उदरं भूयेव वा विश्वेभ्यो वयं प्रीत्या भुङ्क्ते तत्फलमीदृशम् एकः प्रपद्यते ध्वान्तं हित्वेहो स्वां कलेवरं कुशले तर्पे ध्यायो भूतेन्द्रो हेनो भूतति दैवेनासारितं तेषु समलं निरीय पुमान् भूते कुटुम्बो उपोषयिषु धीतवी सो इवातुरो केवलेनो जवर्णेनो कुटुम्बभरणसुता जातिजीवो अन्धतामि संसरमं तमसो पदम् अधस्ता नरलोकैषु जावतिर्यामतान्तुजा क्रमशो समनुक्रम्यो पुनरत्रा ब्रजेषुषि इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां वैयासिक्यां तृतीयस्कन्धे कापिलेये कर्मविपाको नाम 30 श्रीमद्राधागोविन्दकृष्णप्रतिपदानन्दबल हरिबोल हरिबोल। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा। ओं नमो भगवते वासुदेवानु एक त्रिंशद्ध्यायो शिवनुवासो कर्मणा दैव नेत्रेणो जन्तुर्दोह पट्टये स्त्रिया प्रविष्ट उदरं पुंसो उदेत कनस्य कललट्टेक रात्रेणो पंचरात्रेणो बुद्धं दशाहेन तु करकण्डु पेष्यन्दं वा तटोपरम् मासेन तु शिरोदभ्यां बाहुलाढ्याङ्ग विग्रह नखलोमस्तिर्मर्माणि लिङ्गसिद्रोभिवस्त्रभिः चतुर्भिरावतो सप्तो पञ्चभिः शरभिर्वायुनावीतो कुक्षो भ्रम्यति दक्षिणे मातुर्दग्धापानज्ञै रेदरटातुरसन्मति शेते बिन्मुचयोर्गतेषु जन्तुर्सम्भवे कृमिभिः क्षतसर्वाङ्गो असौ कर्मासु प्रतीक्षितां मूर्छामाप्नोत्युरक्लेशो दत्तद्यै क्यूतिबध्यते कुटुम्बिक्नो करत्राटो कराम्नादिवजने मातृमुक्तैकर्षेतो उल्लेन संवितस्तो शून्यमन्त्रैषु बहिरावृतो आस्ते कृत्वा शिरो कुख्यो भुग्नपृष्ठशिरोध अकल्या स्वङ्गचेष्टायां शकुन्तो इवो पञ्जरे तत्र लब्धस्तीति दैवात् कर्मजन्मो सतोद्भवं
स्मरन् दीर्घानुशयान् सर्मो किं नामो विन्दति आरभ्यो सप्तमान् मासान् लब्धमाधवो गोपी वेपितो नैकत्रास्ते श्रुतिवाटे विष्टा भूरिवो सोदर नाथमानो ऋषिभीतो सप्तवयी कृताञ्जलि स्तुभीतो तं विक्लवाभासा जेनो रेदोर्पितो जीवोवाच तेषु गोपन्नमावीतं जगद्दीशात्मनो नानातर्को भुवि चलाचरणारविन्द सोऽहं व्रजामि शरणं जगतो भयं मे जेनेदिशि गतिरदर्श्या सतो अनुरूपा जस्तत्रो बद्धो इवो कर्मभिरावृतात्मा भूतेन्द्रियाशयान मीलं व्यामायाम् आस्ते विशुद्धमविकारमखण्डबोधो मातपम्यानो हृदये पशितं नाम जो पंचभूतो हृदये रहितो शरीरे सन्नो अथेन्द्रिय गुणार्थ शीतात्मकोऽहम् तेनापि कुण्ठमहिमान मृषिङ्तमेनो वन्दे परं प्रकृतिपुरुषयो पुमांसन् जन्मायारूगुणकर्मणि निबन्धं यस्मिन् संसारिके पथि सरां यस्तदीति श्रमेण नस्तस्मीति पुनरयं प्रोवृणीतो लोकं युक्त्या कया महदनुग्रहमन्तरेण ज्ञानं यदेतद्ददात् कथमोऽसो दैवस्त्रीकालिको क्षीरचरेष्वनुवर्तितांसं तं जीवकर्म पदवी मनुवर्तमानष्टापत्ययोपशमनाय वयं भजेम दध्यन्यदेहविवरे दथराग्नीनां श्रीग्विन्मूत्र कूपपतितो वृष सप्तदेहे ईशन्नीतो विभीषितं गणान् समासन् निवर्षति कृपणे भगवन् कदानु जेनेदिसिंगतिमसो दशमास्य ईश संग्राहितो पौदैनो भवादृशेन स्वेनैव त्रितो कृतेनो दीननाथो को नामो तत्प्रकृति विनाञ्जलिर्कुर्यात् पश्यतायं विधिशनया ननु सप्तबद्धि शरीरिके धमशरीरपर्यस्वदेह जदशिष्टमाश्रुतमहं पुरुषं पुराणं पैसे बन्दे धीरिशो चैतमीवो प्रतीतं सोऽहं वसन्नपि विभो बहुदुःखवासं गर्भन्नो निरितगमिमे बहिरन्धकूपे जात्रोपायातमुपसर्पति देवमायामिथ्यामनुमतिधर्म संस्थिति चक्रमेतत् तस्मादहं विगतविक्लवो उद्धरिष्ये आत्मानमाश्रुतमसो सूर्यात्मनेव भूयो जथा व्यसनमेव इन्द्रेन्द्रियो मामे भवेद्युत्यापासनं विष्णुपादो शिवोन्वासो एवं कृतमतिभिर्गर्भमास्यां सुबन्धिभिः सद्यो क्षीपत्यवासिनं प्रशुष्यै श्रुतिमारुतः तेनावशेषो ससाकृता वाक्शिरो आतुरो विनिष्क्रान्मतिकृष्येनो निःश्वासो हतस्मृति परितो भव्याश्रीसिंहो विष्ठाभुर्यो चेष्टते रोरूय गतिज्ञाने विपरीतं गतिं गतः परसन्दमविदुषापुषमानो जनेन सो अनभिप्रेतमापन्नो प्रत्याख्यातु मनीश्वर सहितोषु विपर्याङ्के जन्तुषे दूषिते नियसकन्दुयङ्गा नाम सनेठान चेतने टूडन्त्यामसतं तं सामसकामत्कुषादय रुहन्तं वियतज्ञानं किमियोटमिकं यथा इत्येतं सैजवं भुक्त्वा दुःखदं पौगुण्डमेवसु अलब्धा व्यतिर्षीतो ज्ञान दिग्धमन्युषु चार्पिता सौदेनो मानेनो वर्धमानेनो मन्युना करोति विग्रहं कामी संस्तारो सात्वनं भूत्यै पञ्चभिरावन्दे भीरादिध्य बुधो सखि अहं ममेत्य सद्ग्राहो करोति कुमतिं
तदर्थं कुरुते कर्मो यद्बद्धवजाति संस्थिति जीवो निष्णाति यद्यत्क्लेशमीय क्लेशविद्या कर्मबन्धनम् यज्ञ सन्दीपथि पूनो शिष्णोदरकृतमयि आस्थितो रमते जन्तुस्तमो विंशति पूर्ववत् शैत्यं शौचं दया मौनं बुद्धिरिहि श्रीजसो क्षमा समोदमो भगवत्येति यत्सङ्गात् जाति संख्यं ते अश्वसन्तेषु मूलेषु खण्डितात्मा स्वादुषु सङ्गं नो कुर्यात् यस्य जोषित् क्रीडा मृगेषु नो तथैष भवेन्मोहो बन्ध सैन्य प्रसंगतो जोषित् संगात् यथा पुंसो यथा तत्संगी संगत प्रजापति स्वां द्वितां दृष्ट्वा तद्रूपदर्शित रोहितभूतांसो अदन्वान् वृषरूपी हतत्रप तत्शिष्टेषु शोखण्डी तदि पुमान् ऋषिर्नारायणमृते जोषिन्महे माया बलं मे पैशो मायया श्रीमज्जाजयिनो दिशा जाकरोति पटाक्रान्तान् भुवि जिम्बेनो केवलं संगं नो कुर्या प्रमादाशु जातु योगैषो पारम् अपरमारुरुक्षु सत्सेवया प्रतिलब्धात्मभावो वदन्ति जानीरयद्वारमैषसु जोपजाति निर्माया जो सिद्धेवो विनिर्मिता तामिख्येतात्मनो मृत्यु त्रिनैकूपति कूपमिवावृतम् जाङ्मन्यते पतिं मोहान् ममायामृषवाइति स्थितं स्त्रीसङ्गतो प्राप्तो वित्तापत्या गृहप्रदं तमात्मानो बीजानीयान् पत्या गृहात्मतां दैवोपसारितं मृत्युं मृगयोर्गायनं यथा देहिनो जीभूतेनो लोकान् लोको मनुव्रजन् भुञ्जान्येवो कर्माणि करुत्या वीरतं पुमान् जीवो ध्यस्मानुवो देहो भूतेन्द्रियमनोमय तन्निरोधादेशो मरण आविर्भावन्तु सम्भव द्रव्योपलब्धिस्थानेषु द्रव्यख्यायोग्यता जरा तदैवो चक्षुर्द्रष्टुं त्वाद्विज्ञतानेव तस्मान्नो कार्यसम्प्रान्तो नो कार्पण्या नो सम्भ्रमो बुद्धाजीवगतिं धीरो मुक्तसङ्गोत्तरेत्यः सम्यक् दर्शनया बुद्ध्या योगवैराग्ययुक्तया मायाविरचिते लोकोत्तरन्मयिषु कलेवरम् इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंससंहितायां वैयासिक्यां तृतीयस्कन्धे कापिलेये जीवगति नामैकविंशोऽध्यायो श्रीमद्राधा गोविन्द कृष्ण प्रत्यानंद बोल हरि बोल हरि बोल। नमो भगवते वासुदेवाय। द्वात्रिंशोऽध्याय श्रीभगवानुवाच अथो योगमेधियान् धर्मन्यवासङ्गृहे काममर्थञ्चो धर्मान् स्वान् दोग्धि भूयो विपत्तितां स्वचापि भगवद्धर्मात् कामोर्हो परामुखो भजति क्रतुभिर्देवान् पितृषु श्रद्धयान्वितः तत्सदयाक्रान्तो मति पितृदेवव्रतः पुमान् गत्वा चन्द्रमसंलोकं सोपापुनरेशति जरासासीन्द्रसज्जायां सीते अनन्तसम्मोहनि तदा लोको लयं जानति तोयेति गृहमेधिनां ये स्वधर्मं नोनुध्यन्ति धीरा कामार्थयेतवे निसङ्गान्यस्तकर्मणः प्रशान्ता शुद्धचेतसः निवृत्तिर्धर्मनिरता निर्ममा निरहङ्कृता स्वधर्मावर्तेनो सत्येनो परिशुद्धेन चेतसा
सुरद्वारेणोति जानती पुरुरूपिष्टमुखं परावरेशं प्रकृतितमीश्वरपट्टन्तवालनं दीपरार्धवसाने जो प्रालयो ब्राह्मणस्तुते तावद्वज्यार्सते लोकान् परेषु परिचिन्तका नाम्भो नरानीलो विषयानीन्द्रियार्थभूतादिवि परिवृतं परिसञ्जरिः अव्यारितं विंशति गुणात्यात्मकालं पराख्यानुभूयो परो स्वयंभू एवं परेतो भगवन्तमनुप्रविष्टो जे योगिनो जितमरुन्मनो विराग तेनैवो साकममृतं पुरुषं पुराणं ब्रह्मो प्रधानमुपजन्तो अथोत सर्वभूतानां हृत्पद्मेषु विचालयाम् अनुभावं शरणं ब्रह्मभावी न भाविति एवं परेत्यो भगवन्तमनुप्रविष्टे ये योगिनो जितमरुन्मो नभो विरागा तेनैव शाकमृतं पुरुषं पुराणं ब्रह्मो प्रधानमनन्त्यागतिर्मान अथो तत् सर्वभूतानां हृदयपन्थेषु कृतालयं श्रुतानुभावं शरणं ब्रजो भाविनो भाविनि अज्ञास्थिरचराणां जो वीरगर्भो सहर्षिभि जोगेश्वरै कुमारजै सिद्धै योगो प्रवर्तिकै भेददृष्टाभिनानेनो निसंगेनापि कर्मणा कर्तृत्वार्थोऽनं ब्रह्मो पुरुषं पुरुषर्षभम् झो संसृत्यो पुनः काले काले नाश्वरमूर्तिना जाति गुणव्यतिकरे यथा पूर्वं प्रजायति ऐश्वर्यं परमेष्ठञ्चो तेनापि कर्म विनिमितं निसृज्य पुनरायाति गुणव्यतिकरे सति जेतिहासक्तमनसो कर्मसु श्रद्धयान्विता कुर्वन्त्यापि शब्दायनो नित्यज्ञापि सो कृष्णश रजसा कुण्ठमनसो कामानात्मानो जितेन्द्रियाः पितृञ्जयन्त्यानुदिनं ग्रमेतीति आशया त्रयीवरिकान्ते पुरुषं विमुखा हरिमेधसु कथायां कथनीयो विलक्ष्य मधुविष नूनं दैवेनोऽभियतामाचाच्युत कथासुरां हित्वा शृण्वन्त्यात् जद्यथा पूरिमिवो विरङ्गुः दक्षिणेनो पथश्यामनो पितृलोकं व्रजन्ति ते प्रजामनु प्रजानन्ते स्म स्नानन्तो क्रियाकृत तदस्ते क्षीणसुकृताः पुनर्लोकमिमं प्रति पतन्ते विवशा देवैः सज्जो बिभ्रंशीतादयाः तस्मात् त्वं सर्वभाविनो भजस्व परमेष्ठिनो तद्गुणाशया भक्त्या भजनीया पदाम्बुज वासुदेवे भगवती भक्तियोगा प्रचोदिता जनयासु वैराग्यं ज्ञानं जद्ब्रह्मदर्शनं दरस्यो चित्तमार्थेषु समेधि समेष्वेन्द्रियवृत्तिभिः नो विगृह्णाति वैषम्यं प्रियमप्रियमित्युत सो सदैवात्मनोत्मानं निसंगो समदर्शन हेयोपादेयसं पादेयरं हितमारुरं पञ्चमीख्यत ज्ञानमत्रं परं ब्रह्म परमात्मेश्वरूपमान् दृश्य दिशादिभिः पृथग्भावै भवानेको ईयते एतावानेव योगेनो समग्रेणो योगिनो युज्यते अभिमतो ध्यर्थो जडसङ्गस्तु कृष्णस्य ज्ञानमेकं पराचीनै इन्द्रियैर्ब्रह्मो निर्गुणम् अवाभ्यात्यारूपेणो भ्रान्ता शब्दादिधर्मणा तथा महानं रूपं स्त्रीभिः पञ्चविधो स्वरात् एकादश विधस्तैषो वपुरन्दं जगद्गतो एतद्वै श्रद्धया भक्त्या योग्याभ्यासेनो नित्यशो समाहितात्मानि सङ्गविरक्तो परिपृच्छति इत्येतत्तीव्रं गुर्विज्ञानं तद्ब्रह्मो दर्शनं येनावविद्यते तत्त्वं प्रकृते पुरुषैषो
ज्ञानजोवंशो मन्यस्थो निर्गुण्या भूतिलक्षणा मयोपेतो यवार्थो भगवत् शब्दलक्ष्या यथेन्द्रियै पृथग्द्वारै रथोर्बहुगुणस्य एको नानीति नानायति तद्भगवान् शस्त्रबलबली क्रियया कृतवीरानैस्तपो सध्यायनाशनैः आत्मेन्द्रियजेनापि सन्न्यासिनसु कर्मणां योगिनो विविधांगिनो भक्तियोगिनो चैव हि धर्मेनो भयचिन्धेनो जो प्रवृत्ति निवृत्तिमान् आत्मतत्त्वावबोधेनो वैराग्येनो ध्येन सुयते भवानेऽपि सुगुणो निर्गुणो सुधि प्रभोषं भतियोगैषु स्वरूपं ते चतुर्विधं कालेषु च व्यक्तगते अन्तराधीते जनेषु जीवेषु संस्थिते विविधेषु विद्याकर्मनिर्मिताः जा सङ्गो प्रविशज्जा नो वेदो पतिमात्मनः नैतं खलायो पदीशन्नावतितायो करिषि नो स्तब्धायो नो भिन्नायो नैवो धर्मध्वजायते नो लोलुपायो विशिन्ने गियारो दुरसिरसि नावटासु नो जातु नो मद्भक्ति दिशामपि सदरानाय भक्तायां विनिताया न श्रूयेर्भूरि भूरेषु कृतमैत्रायो सुविद्यायोषु वैरजाट विरागायो संसितायो दीयते जन्मसराय सुसायो देशां प्रियसां प्रिय जो इदिं शून्यादस्यो श्रद्धया पुरुषो सति जो वाभिधत्ते मसीत धेति परविंशो में इति श्रीमद्भागवते महापुराणे परमहंस वैयासिक्यां तृतीयस्कन्धे कापिलेये कर्म विपाक नामो द्वादशाध्याय श्रीमद्राघव कृष्ण प्रजानंद बल हरि बोलो। ओं नमो भगवते वासुदेवाय तृतीयस्याध्याय श्रीमैत्रेयवाच एवं निसैम्यो कपिलेषु वाचो जनिचीसा कर्म कर्मैषो दैता किलो देवहूति विशिष्ट मोह पटला तमिष प्राप्यो तुष्टावो तत्व विषया तद्विभूम्य देवहूतिवाचो अटप्ये जंतो शरीरे शयानं भूतेन्द्रियार्थात्महं वपुष्टे गुणप्रवाहं शरीरस्य बीजं दधौ स्वयं जठरा जातो सोयेवो जीवेशवान् विदति गुणप्रवाहेनो विमुक्तवीर्या सर्गाजनीहो अभिरार्थवीरा विराजदोह तर्क्याशक्ति सोतं भूतो मे जठरेण नाटो कथं नो ध्यजो नितरासि विसंयुगान्ते कवतत्रयेको शेते स्मो मायाशिशूरं विपानः त्वं देयतन्त्रो प्रसमाय पापमनांनि देशभाजांचो विवोते यथावतारस्तवो शुकरास्तथा आत्मपयो लब्धते जन्नामदेव श्रवणानुकीर्तनं जत्प्रभा जस्मरणादपि कथित् स्वादोऽपि जैषो जवनायो कल्पते कूटो पुनस्ते भवन्नु दर्शना अहोबतो सोपयोः हरियसान् जज्जीग्रव्या वर्तते नामोतिभ्यं ते पुष्टपन्दे जौगुषुरुं न वर्जा ब्रह्माणसु नामोग्रन्थिजेति तं त्वामहं ब्रह्मोपमांसं प्रत्याग्रश्रोतस्यात्मनि संविभद्यं स्वदेशाद्वस्त्रगुणप्रवाहं वन्दे विष्णुं कपिलं वीरगर्भं हिमैत्रेयवाच ईरितो भवन्नेवं कपिलख्यो परोपुमान् वाचा विक्लवरित्याहो मातरं मातृवत्सर शिवन्वासो मार्गेणानेनु मातस्ते शुभेश्यानेदितेन मे अस्ति तेन परां कष्टामचिरात् परुक्षुयेत् श्रद्धं सहित निर्सहितमतं बुद्धं दुष्टं यत्
प्रमवादिभिर्जेनो ममाभयं माया मृत्यु मृष्यते इत्यादिभिः मित्रोवाच इति प्रदेशभानुजात्वा मात्मनो गतिं प्रणत्वा ब्रह्मणा ब्रह्मणादिन्या कपिल्यानुमुक्तो सा चापि तनक्तेनो जोगाने देशेनो जो तस्मिन् आश्रमनापि सरस्वत्या समाहिता अविघ्ना भगाः कपिशान् जटिलान् कुटिलालकान् आत्मानञ्चोग्रतत्तवा बिभ्रति सीदीनं कृशं प्रजापते कर्दमेषोटपूजोगाभिव जिन्वितं स्वर्गानस्थानौपमन्यं प्रथा वैमानिकैरपि वयोफेन निभासज्जाटन्तारूप्न परिसरा आसनानिषु हैमानि सुखस्वर्षान्तरानिषु स्वस्वस्वतीकुज्येषु महामरकटेषु रत्नप्रदीपावान्ति ललना रत्नसंयुता गृहज्ञानं कुसुमितं रम्यं बहमरद्रुमयि कुजद्दीजङ्गमिथुनं गायन् मट्टमधुव्रतं यत्र प्रविष्टमात्मानं विवुरानुसराजगु व्याप्यामुत्पलगन्धिन्या कर्दमीनोपलक्षितम् शीत्वाटनिशीतमामन्त्रवैख्यगूलजूनिरां किञ्चित् दशारो वदनं पुत्र विश्लेषणातुरा वनं प्रोभृजिते पत्या भवित्या विरहातुरा ज्ञाततत्त्वाप्य भूमिष्ठे वत्से गौरीवो वत्सला तमेव ध्याति देवमात्यं कपिलं बहुभूसरितो वत्सो निःशिशो भाविष्यगृहे ध्याति भवद्रूपं जातो ध्यानकोशलं सूतो प्रसन्नवमनं समस्य व्यस्तचिन्तया भक्तिप्रवाहेन योगेन वैराग्येन बलियसा युक्तानुष्ठानेन ज्ञानेन भ्रमेतुना विशुद्धेन तदात्मानमात्मना विशुतो मुखं स्वानुभूत्या तिरो भूतो मायागुणो विवर्षनं ब्राह्मणावस्थिततिर्गतव्यत्यात्मा संशये निवृत्ति जीवात्मा जीवापत्तित्मा अधीनक्लेशाप्त निर्वृत्ति नित्यारूढ़ समाधियार परावृत गुणद्रमा नो सस्मारूतरात्मानं स्वप्ने दृष्टमिवोत्थितो तद्देव परतपोजो सो अप्यकृत सापध्यासमवान् बभौ मलैरज्यमानो मधुमो इवो पावक स्वांगं तपोजो वयं मुक्तकेशं गतं स्वरं दैन्यगुप्तं नो रूढे वासुदेवो प्रविष्टि एवं सा कपिलोक्तेनो मार्गेणाचेतो परमात्मानं ब्रह्मनिर्वाणं भगवन्तं तमापः तदीश्वरसी पुण्यतमं क्षेत्रं लोकत्यादिन्यनं नाम्ना सिद्धपदं योगं संसिद्धिमुपेयुषि तैषात् दन्योगाभिभूतमर्दं मर्त्यामभूत् श्रोतव्यां प्रवशा सौम्या सिद्धिदा सिद्धसेविता कापिलेपि महायोगी भावान् प्योराशयात् मातुरं समनुव्याप्यो प्रागुदीशं जजौ सिद्धाचार्यगन्धर्वे मुनिभिः सरोगणैः स्तूयमाना समुद्रेण दशा दत्तारहनानिकेतन आस्ते योगं समस्थायो संख्याचार्यविस्तुतो त्रयाणामपि लोकानाम् उपशान्तैः समाहितः एतन्निगदितं तातो जत्पृष्ठोऽहं तवानघो कपिलेषु संवादो विभूतेषु पावक जो इदं मनुष्यनोति जो अविदन्ति कपिलमुने व्रतावात्मगुह्यं भगवती कृतदी सूप नकीतो ताम्बूल भरते भवपदारविन्दम् इति श्रीमद्भागवते महापुराणे परमहंस्यां संहितायां वैयासिक्यां तृतीयस्कन्धे कपिलो उपाख्यानं नाम त्रयोविंशोऽध्यायो श्रीमद्राधागोविन्द कृष्ण प्रजानंद बल हरि बोल हरि बोल हरि हरि।
मसक्ता भावानगी चोरोननी साबा लोइग्रे अदुगा मसी फावदा स्कंद अहुम ओइग्रे श्रीमद् भागवत करीगी मसक ओइग्रे भगवान श्री कृष्णचंद्र की गोविंद की अंगभूषण अंग हक्चांग सागत पादौ जदियौ प्रथम द्वितीयौ तृतीय तुर्यौ कथितौ जरूरो नाभिस्तथा पंचमेवो षष्ठो भुजान्तरं दोर्जुलौ तथान्यौ कंठस्थु राजन्नवं जदीय मुखारविन्दं दशमं प्रफिल्यं यकार संजस्सु ललाटपट्टं शिरस्सु जड्वार्ष्म्य भाति पादौ जदियौ अहान्ब श्रीमद्भागवत की अहान्ब स्कंदगा अनि सुबना गोविंद की श्री चोरोन अनि ओइगे अहुम सुबह स्कंदगा मरी सुबह स्कंदगना फैगल अनि ओरे मंगा सुबह स्कंदना कटिन मंडल ओरे तरु सुबह स्कंदना बैखेस्थल मंडल तेरे सुबह निपान सुबना भुजलता पाम्बोम अनि मापन सुबह स्कंदना खौरी अकुटप तरा सुबह स्कंदने श्री मुख कमल तरा माथो सुबह स्कंदना ललाट लाइपक तरा निथे सुबना लवाई लिम्फु मसुक्ता श्रीमद् भागवत की द्वादश स्कंद श्री श्री गोविंद की स्वरूप मी हाइदना मसिन साक्षी पीरी मरमसिना राराकुंडवासी भक्त वैष्णवा वैष्णवीसिन श्रवणाभुति लोगिरकुदा तृतीय स्कंद अहुम सुबह स्कंददी मतांग सेक्ट लोमे तृतीय स्कंद कदाय फाउवा सेवा ओरुबी हाइबदा ये थंगबा फैगन सेवा ओइरे श्री मूर्तिमा मखा ताबदा मरी सुबह स्कंद मथंग मथंग श्रवणाभुति लोगिरो तृतीय स्कंद समाप्त हरि बोल हरि बोलो हरे हरि ओम नमो भगवते वासुदेवाय श्रीमद् भागवत चतुस्कंध प्रथम अध्याय श्री मैत्री उवाच मनुष्टु शतरूपायां तिस्रो कन्यासो जज्ञे आकुलेतियो भैषो प्रवृत्ति विश्रुता आकुतिं रुचिरे प्रादादपि भ्रातिमतिं नृप पुत्रिका धर्मना पाठो शतरूपानुमोदिता प्रजापति सो भगवान ऋषिरस्तस्यान्वीनं मिथुनं ब्रह्मपर्षसि परमेनो समाधिना जस्तयो पुरुषो साक्षात् विष्णु जस यज्ञ स्वरूपति जास्ति सा दक्षिणा भूतेरंश भूतानवापायिनी अनिन्यासो गृहं पुत्रा पुत्रां विजतरोषितं स्वयंभुवो मुदा गुप्तो ऋषि जग्राहु दक्षिणाम् त्वां कामयानां भगवान्नुवाहु जुषापति हिन्दुस्तायां तो समापय आत्मजा तोषो प्रदोषो संतोषो भद्रो शांति वीरपति इग्नोकैभो बंधो स्फुटे आरोसनादिशन् भूषिता नामो ते देवासन् स्वयंभुवन्तरे मनीषी मिश्रमादिशयो यज्ञो शूरगणेश्वर प्रियव्रतो उत्तानपातो मनुपुत्रो महादशो तर्पा तत्पुत्र पुरुषप्तु शान्तं प्रवृत्तरन्तरं देवभूतिर्वदातातो कर्दमायात्मजा मनुत सन्धि सूर्या भवता गते मम दक्षाय ब्रह्मपुत्राय प्राचितं प्ररूपियो प्रायातरारुतो स्वर्ग स्त्रीलोक्यां विरतोषणम् जाक्रमश्रुता प्रोक्ता नभो ब्रह्मर्षि जत्नयो तासां प्रवृत्ति श्रेष्ठनभ्यत्यात्मबोधमे पत्नी मरीचिषे का कला सुशुभे कर्दमात्मजा कैशपं पुनवासंचु जयोरुपूरितं जगत् पूर्णिमासूतो वीरजं विषगंचोत्पतन्तपो देवकुल्यां हरिपाद सुस्याभूत् सरिद्यः आर्ते पत्न्यानसुयातिन्
यज्ञे जीवशयासुरान् दत्तं दुर्वाससां शोधमात्रे स ब्रह्मसम्भवान् श्रीविदुरुवाचो अत्रे दुःखे सुरश्रेष्ठा स्थित्युत्पत्त्यान्तहेतवे किञ्चित् स केशवो जाता जरतख्याहि मे गुरो श्रीमैत्रेयवाच ब्राह्मणाचोदितो श्रेष्ठा भर्त्री ब्रह्मविरावरो सौपत्न्या तथा विसङ्कुलान्तिं तपसीसित तस्मिन् पशूनन्तव पलासा शोककानने वाभिः सविद्भिः रुद्भुष्टे निर्विदध्या समन्तत प्राणायामेनो सन्दिग्धो नो वर्षशतं मुनि अतिशतेकेनो पादेनो निर्दण्डनो नीलभोजन शरणं तं प्रपद्येऽहं सोयेषु जगदीश्वरो प्रजामात्मानवाङ्मध्यं प्रजातिः चिन्तयन् तपम्यानं त्रिभुवनं प्राणायामैधसाग्निना निर्गतेनो मुनिर्धर्मो समीख्यो प्रवस्तयो अप्सरो मुनि गन्धर्वो सिद्ध विद्याधरोगणे विदायानाथशस्त्राश्रमणं यजो तत्प्रादुर्भावो संयोगो विद्योति नवना मुनिः उत्तिष्ठन्ने एकपादेनो ददृशे विबुधर्षता प्रणम्यो दण्डभूमान भूपस्ति अर्हणाञ्जलि प्रियहंस सुपर्णासो स्वयि बन्धीषु चिन्तितं कृपावलोकेनो हसत् वदनेनापलम्बितान् तत्सोचि सा प्रीयते निर्मिल्लो मुनिरखिनि एष श्रवणं युक्त सवासे संकृताञ्जलि श्लखया युक्तया वास सर्वलोको लोकाधीश्वरः श्री अत्युवाच विश्वोद्भवस्थितिलयेषु विपद्यमानेनो गुणनो गीतदेहा ते ब्रह्म विष्णु गिरिशा प्रणम्योऽस्माकं धेतु झूयेतु भवतानो योपहूत यकोमेतु भवन् विविधधाने कृति विदजनायो कथं नुजूयम् अथागतभिरामनसोऽपि दूरावृतो प्रसिद्धतो जराने विस्मयोमि श्रीमैत्रेयवाचो जितेषु वचुश्रुता तयन्ति विबुधार्षभा प्रत्याहो श्लखया वाचा प्रत्याहो तं ऋषिं प्रभ श्रीदेवदेवांशु दराग्रन्थे संकल्पो भाव्यान्ति नैवमाया संकल्पस्तेषु ब्रह्म जद्वैधाति मे वयम् अथास्वरं स भूतास्ते आत्मजा लोकविश्रुता भवितो रङ्गो भद्रं ते वैश्रम्भाय सुतेजसा एवं कामवरं दत्त्वा प्रतिजग्नो शिरसा सवादितोऽस्मै सम्यक् प्रजा सिद्धोऽन्तक सोमो भद्रक्षणो हंसेनो दत्तो भीष्टो गभि दुर्वैज्ञा सङ्ग्रेशासो निवोढाङ्गीरसो प्रजा श्रद्धा अंगिरसो पत्नी चतुर्षो अशुतकन्यका चीनिबाली कुहुराका चतुर्था मनु अतिशता तत्पुत्रा वयवस्था संख्यातो सरोति से अंतरे उठेच्छो भावान सख्यात ब्रह्म स्थंचो बृहस्पति पुलश्चो अजनयत पत्न्या मगन्त्यासो हविर्भुवीसो अजन्मनि अदग्धाना विश्रापो महातपा तेषु जगवती देवो कुबेरस्तीलविलासितो रावणो कुम्भकर्णच्चो तथन्यासां विभीषणा पूलहैषो गतिर्भर्जा तीनसूतो सतीसुतान् कर्मश्रेष्ठं वव्यासं सहिष्णुचो महामते क्रतोऽपि क्रिया भर्जा बालिखिल्यान् सूयतो ऋषिन् षष्ठिसहस्राणि दलजो ब्रह्मते यथा ऊर्जायां दिग्गिरे पुत्र वसिष्ठैषो परन्तपो चित्रकेतु प्रधानज्ञा सप्तदशयो बला चित्रकेतु सुरोसिंचो वीरजामित्रयेवसो उल्लनौ बहुब्रीजाद्युमान् सत्यादयो परे चित्तिष्ठ अथर्वणो पत्नी लेवे पुत्रं धृतव्रतं दध्याख्य मनिवेशं भीषं निबोध मे भृगुः ख्याता महाभागा पत्न्यां पुत्रामजीजन धातारंचो विधातारं श्रियंचो भगवत्पराम् आहूति
नियतिं चैव श्रुते मेरुस्थयोदरा तभ्यां तयोरभवतां मृकण्डः प्राणेव च मार्कण्डेयो मृकण्डेशो प्राणाद्देशो शिरामुनिः कविभिर्भार्गवो देशो भवानुशासनासुतो सर्वे ते मुनयो क्षत्रलोकान् स्वर्गे भावयन् येषो कर्दमं दुहितास्थानो कतिपयो सन्नतो धरानायो पापरो परो ऋषिमाटविं चक्षुपजेमे जात्मजो तैषां प्रेषो दुहितरं शोषनामालोचना त्रयोदशा धर्मायो तथैकाम भग्ने पुनर्विभु पितृभ्यो एको युक्तेषु भवानीकं भवस्वे श्रद्धामिति दया शान्ति न्यस्तुष्टि पुष्टि क्रियान्नति बुद्धिर्मेधातिथिख्याधि मूर्ति धर्मेशोपत्नया सदाशुतो रीतं मैत्री प्रसादमभयं यथा शान्ति सुखं उदातुष्टिं स्वयं पुष्टिरसूयत योगं क्रियान्नति धर्ममदर्शं बुद्धिरसूयो मेरा स्वीतिं तिथिख्यासो खितिधि स्वस्वयं सुतं मूर्ति सर्वगुणोत्पत्ति नानाविधा नारायणावृषि जयोर्जन्मतो विश्वत्याभिनन्दन्यशूनिर्वृतं मनांसि कहो बाटा प्रसूदे प्रसेदु सरितोदया दिव्या वैद्यन्ति तुर्यानि पीतु कुसुमवृष्टया मुनयन्तु स्तु भूतस्त्वा जगुर्गन्धर्वा किन्नरा नित्यन्ति स्मोऽस्तियो दिव्या नास्ति परममङ्गलम् देवा ब्रह्मादेव सर्वा उपतस्तु भीष्टवै देवासु जो माया विष्टं निजयात्मनीतं खेरूपभेदनीपोत प्रतिसादनम् एतेन धर्मसङ्गेन ऋषिमुपार्य प्रादुचकारो पुरुषायो नमो परस्मै सोऽयं स्थितिभ्य व्यतिकरोति प्रशमनाय शिष्टान् सत्येन नो सुरगणा अनुमेयत दृश्याद्भूगरूपेण विलोकेन कानेनो दशनिकेतममलं क्षिपतारविन्द एवं सुरगणै स्तातो भवान् स्तविवस्तुतो लब्धा बलोकैर्सत्पूरसितो गन्धमातनम् ताभीमो वै भगवतो हरिर्वंशाविहाय गतो भारव्यायतो भुवः विष्णौ जदुवन्दतो स्वाहा भीमाननिचराग्नेयात्मदस्तिनानि जनत् पावकं पवमानं च शुचिकं भूतभोजनं भोजो अग्नयो मम चाध्यान्तिकं पञ्चको तो येकैकोना पञ्चाशत् साकं पितृपितामहे वैतानिके कर्मणि जन्नामाभिर्ब्रह्मवादिभिः अग्नेयो इष्टभोजज्ञे निरूपयन्ति क्लेयन्ति ते अग्निस्वाटा वरिषद सौम्या पितरो अद्यपान् साग्नयो अग्नयस्तेषां पत्नी दख्यानीश्वरः तद्यो नरारो कन्यते वसुयपायुनां धरणिरथा ऊभेते ब्रह्मवादिन्यो ज्ञानविज्ञानपार्गे भवैषु पत्नी तु सती भवं देवमा अनुव्रता आत्मनो सद्दृशं पुत्रं मूलेभे गुणशीलता पितर्यो प्रतिरूपे स्वे भवानागरूपे यथा अप्रौढैवात्मनात्मानो संयोगसंयुता इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां वैयासिक्यां चतुर्थस्कन्धे दख्यायन नामो प्रथमोऽध्यायो श्रीमद् राधा गोविन्द कृष्ण प्रत्यानंद बोल हरि बोल हरि बोलो।